More than a month after its release, the film Kantara continues with its dream run. Quite a global phenomenon, a movie that started off just as a Kannada film with quite a humble release. A month later has now become a pan-India, a global success. And I'd like to welcome here in Delhi, Rishabh Shetty, thank you very much. Sapthami Gowda, fabulous portrayal of your character. So delicate, so beautiful for a swimmer like you. Didn't expect it, but I think you've proved every critic wrong. And you come from my school, my city, my everything. I'm so proud. I'm from Karnataka myself, and I can't tell you how overwhelmed I am that a Kannada film, yet again, after KGF, has made us so proud across the world, right? Rishabh? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು and you know ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಯಾವತ್ತು ಆಯ್ತಾ but what are people really saying about your movie, Rishabh? I know that you never expected it. I've heard your interviews. You've been saying that it has taken us by surprise, but your craft is so perfect. You have essayed it with such, you know, stellar perfection that you should have imagined that this would have been the outcome. Too much of English. So ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದಿಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸಾರಿ. ಮಾತಾಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ फील्स गुड क्योंकि ऐसा एक कन्नड़ा कंटेंट लेके आके हम लोग रिलीज किए हैं. उसके बाद जो वर्ड ऑफ माउथ के हिसाब से जो स्प्रेड हुआ और उसके बाद जो दूसरे लैंग्वेज में भी रिलीज हुआ है, तो सारे दुनिया से इतने सारे अप्रिसिएशन आ रहे हैं, देख के बहुत खुशी हो रहा है. You expected it or what? Tell me honestly. No. I didn't expect this kind of a success. So I think वो फिल्म का है वो, मतलब एक सिनेमा हम नहीं कर सकते, वो हो जाएगा वो. So एक जर्नी होता है उसमें. So we are just part of that journey. You know, I'd like to ask you about your lungi that you've worn today, and you've been maintaining this look for a while. So it's from large style. ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. So and one month from morning to evening you're in a lungi in your village. ಹಾ, ಈಗ sometimes ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. But I want to know if this lungi is fully worn or does it have a clip? No, ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಲುಂಗಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲುಂಗಿಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ತರ ಸಮಾಧಾನ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. Rishabh is so relieved that he can speak Kannada with me, but Rishabh, try a little bit of English. So I know you can. But what he's basically trying to say is that lungi is your attire. See, it's a dubbing cinema. It's basically a Kannada cinema. We have dubbed into other language. So you are our dubbing. None can even imagine that you have such a funny, light, warm side to you. From what we saw, the portrayal of yourself in the film. No, Shiva has that. ಇದಲ್ಲ ಮಜ್ಮಜ್ವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. Except that ದೈವ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ. So happy go lucky. Is that who you are in person? Some percentage. थोड़ा बोलिए आपके बारे में. हम सब जानना चाहते हैं शिवा के अलावा. जो शिवा का जो रेज है वो तो है मेरा अंदर. तो वही तो बचपन से मेरा सोच था कि ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है. तो बाहर तो ऐसा हम लोग डेली लाइफ में ऐसा बिहेव नहीं कर सकते. ठीक है, जो सिनेमा में लेके आ सकते. और बहुत सारे लोगों को मैं देख के वो कैरेक्टर को बिल्ड किया था. शिवा इन पर्सन एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था स्कूल कॉलेज में, एंड मजा करके. Below average student, you know, Sapthami, you tell us the real side. You want my mask card? You want my mask card? As a student, apparently he is below average. No, what is this above I mean, but as a director, actor, number one successful film in the country today. And I can't think that the guy or, you know, the actor was any substandard in even during his childhood. आपको मेरा मार्क्स कार्ड चाहिए? नहीं, मगर शायद 5th स्टैंडर्ड में फेल हुआ था मैं भी थोड़ा मॉडरेटी थी, मगर no, 5th स्टैंडर्ड में फेल हुआ था मैं. No way. Seriously फेल हुआ था मैं. तो उसके बाद अब क्या, you always thought I'll be an actor, forget studies. वो क्या ना, एक मतलब सिनेमा देख के टीवी पे डॉक्टर राजकुमार के गाना आते थे, वो देख के मेरा माँ भी बहुत बड़ा फैन है अन्नोरू का. सो वो देख के मुझे भी बहुत अच्छा ब्लेजर लगा कि वो एक एंटिक कार,
ब्यूटीफुल क्रॉप, एक मीस है, चंदा मीस है. ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದು mimic. I know you can mimic. By the way, So for those who ಬಾನಿಗೊಂದು don't ಎಲ್ಲೆ know, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಾಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. Rishabh is a great mimic. He's going to mimic Dr. Rajkumar for us. स्टोरी ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ओके. सो वो देखे अनौर ऐसा ब्यूटीफुली ड्राइव करते थे. मैं सोचा अगर मुझे भी ऐसा हीरो बनना है, लेकिन क्या करना है, मैं सोचा कि ड्राइविंग सीखना है. अगर ड्राइविंग सीखा तो हीरो बन सकता हूँ. एक्टिंग सीखने का तो वो आइडिया नहीं था. Oh gosh. सो ऐसा कुछ चाइल्डहुड में ऐसा आइडिया था. ड्रीम था, मगर हाँ. अंत में आप सब कुछ बन गए. If you are an actor, you can do everything, driving, action, everything. हाँ. And yeah, you know, I should highlight before I come to your mimicking skills that you've done every scene here without a body double. हाँ. The most amazing action scenes which is spoken about across the world, mind you, it's all without a body double. And that fitness levels, I don't know where you get it. You're what, judo champ or wrestler champ, I heard? I was a wrestler and judo player also. मेरा national भी हुआ था judo. Wow. So छोड़ दिया बाद में, एक बोन क्रैक हो गया, छोड़ दिया. अच्छा. सप्तमी के साथ कभी लड़ाई हुई? नहीं नहीं, ऐसा लड़की के साथ हम लोग ऐसा नहीं करते. स्विमिंग चैंपियन है. हाँ, इसलिए. इसका भी बोन डेंसिटी सॉलिड होगा. Solid तो है. Did you ever try getting into a judo competition with him? I just watched the action sequence. I said, okay, this is not for me. I will stand and watch. उनका भी एक्शन सीक्वेंस था ना, क्लाइमैक्स में एक 2-4 सीक्वेंस रखे थे हम. हाँ. तो बहुत अच्छा एक्शन भी किए. What got you to select Sapthami, if I can ask you? Sir, Because you are. मतलब मुझे एक You've worn so many hats. I know that you've taken every decision for the film, including Sapthami's role. डेफिनेटली वो लीला एक ट्राइबल कम्युनिटी से आ रही है और पहली एक एजुकेटेड थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ट्रेन होके ड्यूटी ज्वाइन होने आ रही है. सो फिजिकली शी शुड नॉट लुक लाइक वन, आप बोलते हैं ना, मतलब बबली क्यूट वाला हीरोइन जैसा लगना नहीं चाहिए था. सो इसलिए हम लोग ज्यादा इनको डिटैन किए हैं. तो टैन किए. सो पूरे कलर पूरा निकाल के. They tanned you? या 2 दिन का है. उसके बाद जो उधर का जो समर में हम लोग शूट करते थे, बाहर आ गया तो स्किन टोन मैच हो गया उसके बाद. सब लोग. सो उसके साथ ही वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गार्ड का ट्रेनिंग हुआ, तो वो फिजिकल अपीयरेंस भी वैसा ही होना चाहिए था. सो और लुक एक नॉर्मल लड़की का जो लुक चाहिए था, वो मैं सर्च कर रहा था. उस समय इनका एक इंस्टाग्राम के फीड में आया, जो साड़ी पहन के एक टेंपल में इन्होंने फोटोशूट किए थे. वो देखा मैं. देखने के बाद ಅವತ್ತು ನೀವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ದೇವಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. God's blessings for you. I know, divine intervention has to be. So you put a casual picture on your Instagram profile. Yes. Tell me what happened. So and then that picture, sir saw on his Instagram feed and said he then remembered my dialogue from my first movie had gone viral. So he remembered, oh, this girl, no, and then he called me to his office and we did 3 days later a look test happened. Then auditions happened on the same day, I think 27th of July, and then we did workshops, and on the day of Muhurta at Anegudi temple I got to know I'm selected. Now we are sitting here today and we're talking about the movie. Yes, a swimming champion. What all, she's done engineering, then a great swimmer. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಮೆಡಲ್ ಅಂತ. No, 100%. No. Was really hard. Or influence. No. सो नम DOP अरविंद कश्यप एंड हम लोग बात करते थे कि अगर वो ऑन योर मार्क गेट सेट गो बोलते हैं ना, सो वो ऑन योर मार्क गेट सेट, ये जब मारती है तो मेडल मिला ऐसा. तो पुलिस का बेटी है तो क्या करते हैं, दे दो. हाँ, दे दो एक मेडल ऐसा. नहीं तो 240 मेडल्स जीते हैं इन्होंने. I know, that's what I said. For someone like you, an ace swimmer, they say that usually sports women are not as feminine, but look at the way you've craftfully. No, it was like, I mean, we went through a workshop and everything, so the workshop helped a lot. Yeah, sanitized. Yes, I had to leave completely, let go of myself, let go of Sapthami, the swimmer, the athlete, everything, and become Leela.
So that happened in those 2 months. So whatever. Have you been a tomboyish? Yes, I've always been super active. Keep jumping, rolling around. That's what I keep doing. I enjoy myself. I mean, self-harm myself a lot, hurt myself a lot. So I'm very clumsy also that way. So that's who I was. So I had to let go of that completely, that entire characterization of what I am, and then convert myself into. Yeah, I mean, so craftfully delicate your performance. I wanted to do that. And yet with so much power. Yes. And that was really such a delight to see. But, getting to you, before I get to anything else, I want your mimicking skills right now on full display. I know you can do Annavaru. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೀವು ತಗೊಂಬಂದು ಈ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನೋಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳಪ್ಪ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. Dr. Rajkumar came alive. ಅಯ್ಯೋ. Fabulous. Appu also, we remembered him just, on his anniversary. And, you have spoken of Appu so many times about what kind of inspiration he's left behind. Would you want to tell on this occasion of your success? Definitely, वो है तो बहुत celebrate करते थे. So that was a missing part. So लेकिन उसका जो blessings तो है इस फिल्म में, क्योंकि मैं एक बार एक सिचुएशन भी आया था, उनको भी मैं कहानी बताया था, वो भी करना चाहते थे, और लेकिन उसका डेट के इशू से कर नहीं सकते हम लोग. लेकिन एक शेड्यूल खत्म करके मैं और एक इवेंट में मिला था, लास्ट में अपू सर को मिला. सो उन्होंने उस समय भी जो ऐसा जो स्टोरी तो मुझे कहा था, तो वैसा ही आ रहा है ना, तो ऐसा कुछ पूछ रहे थे, और उस समय मैं उनको कुछ विजुअल्स का जो इमेजेस दिखाया था, जो दैव का जो प्रोसेशन जाता है वो इमेज, और कुछ एक्शन सीक्वेंस का भी कुछ. So Puneeth Rajkumar has vetted your film. डेफिनेटली इसलिए मैं ये फिल्म उनको मैं डेडिकेट करना really? चाहता हूँ. हाँ. सिर्फ ये Rishabh फिल्म Shetty नहीं, dedicates Kantara to Puneeth नॉट ओनली Rajkumar. कांतारा, मेरा जो आगे क्या क्या काम करता हूँ वो सारा काम अपू सर को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ. Wow. Yeah, ये he's सच्चे really, yeah, a piece of our heart उसको is अभी gone. हम विश्व मानव कहते हैं. अभी गंधदगुड़ी रिलीज हुआ, तो देख के इतना इमोशनल हो गया हम लोग. मतलब such a pure soul he is. So Can't say enough. Right, but Rishabh, what a success, from the film that was made at a budget of 16 crores to what it is today. We hear global connection, 300 crores, your Hindi release itself, 50 crores. So we're looking at a whopping 1,300% jump from what you spent to what you earned. Finance Minister Nirmala Sitharaman spoke about this as an ideal business, model. How would you look at that? मतलब नो रिएक्शन. क्या बोलूं मैं, मतलब बहुत नॉट ओनली ऑडियंस, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, सब लोग इतना एक अप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो देख के बहुत खुशी होता है. और जो कंपैरिजंस, जो बजट के बारे में हम लोग तो नंबर नहीं बताते, और लास्ट में पूरे कलेक्शन के बाद हम बड़े फिल्म्स will reveal officially. Yeah, it's closing into 500 crores, and I know that there's been a series of southern films, and one thought at one point that this is just a fad, this south spice and this excitement will go down very quickly, and then from nowhere came Kantara. We were all caught by surprise. अच्छा रहता है सरप्राइज देने का. अच्छा रहता है. और ये सब ऑडियंस की वजह से वो लोग इतने, अभी भी जो हमारा जो प्रमोशंस कुछ नहीं है, मतलब वो लोग अभी वर्ड ऑफ माउथ इतना स्प्रेड कर रहे हैं. मतलब आज हमारा पीआर टीम हमको इंडिया गेट लेके आके उधर फोटोशूट कर रहे थे. उधर भी बहुत सारे नॉर्थ इंडियन लोग फिल्म देखा है वो लोगों ने. इधर भी होटल में भी बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. मेरा थोड़ा ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन का थोड़ा अलग रहता है, मतलब उधर कुछ अलग दिखता हूँ. तो हैंडसम दिखते हो ऑन और ऑफ स्क्रीन. अच्छा, थैंक यू. ठीक लगते हो. थैंक यू. तो इतना रिकॉग्निशन और इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत एक but I'm from Karnataka and from Mangaluru, so I know very well what the capability and the craft Rishabh Shetty always displayed, even in your many other successful films in the past. But today I'm so glad that the world has got to see it, because you don the hat of a filmmaker, director, an actor. Every little nuance of the film is what you immerse yourself into, and I think that's what shows. He has full control over what he does, that it absolutely shows.
डेफिनेटली टीम वर्क इज देयर. सो मेरा टीम के वजह से एक इट कांट बी वन मैन शो. नो डाउट. क्योंकि एक प्रोडक्शन का जो लड़का है उसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है. सो सब लोग का कंट्रीब्यूशन, एनर्जी, वाइब सब मिलके एंड प्रोडक्शन हाउस, ऐसा एक प्रोडक्शन हाउस मिला तो डेफिनेटली विल वर्क लाइक दैट. एंड वो एक एनर्जी आता है ना, तो वो आके ऑन स्क्रीन ट्रांसफर होके वो ऑडियंस को ट्रांसफर होना एक बहुत अच्छा एक जर्नी है. So I have to thankful to all my team. God, how are you so humble, but Rishabh, after so much of success? I mean, I was just talking to my team here, Aishwarya and our, unit, that you are the same. And I, तो क्यों चेंज no, क्यों होना एक चाहिए? होता है ना, थोड़ा एयर आ जाता है. कंफर्टेबल रहता हूँ मैं, आराम हूँ मैं, क्यों एक्स्ट्रा? क्या एक्स्ट्रा क्या? मतलब एक्स्ट्रा कुछ आप ये मतलब इंटरव्यू में देखता हूँ कुछ ये सब बोलते हैं ना लोग, तो वो मतलब एक जमता नहीं हमको. स्टाइल में कूलिंग ग्लास डालना, एक फैंसी कार ये से भी उतरना. एक मतलब ये भी सो रही हूँ, मतलब 3-4 महीने 5 महीने से मेरा नींद इतना कम हो गया मतलब टाइम नहीं है, so इसलिए मैं कवर करने के लिए ही डालता हूँ बस. Okay, now that you pull your glasses down, do that squint tight. No, I won't do. You will make it a thumbnail out of that. I won't. No, I promise I won't. I promise. But you know, Rishabh has another talent. He can do the squint eye stunt. No. I swear we won't. I swear. वो क्या I'm ना- saying this on air. We won't. No, ये करने के बाद वो स्क्रीनशॉट लेते लोग, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसमें ट्रोल कर देते. No. I will ensure that won't happen. Please. I know you entertain कैमरा the entire. कैमरा बंद होने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ. Damn. It's caused problems for me. You are finding it funny, but it's caused problems. Okay, so he did this squint eye thing in front of me. I'm नहीं, sad that the audience can't see आपको it. देखना है तो मेरा एक फिल्म है कथा संगमा, which I have produced it. It's an anthology. Where you go all squint eyed. जो अमेज़न में है, तो उसमें एक कहानी है, उसमें मैं एक कैरेक्टर क्या हूँ, उसमें पूरे कहानी में मैं स्क्विंटाइज में हूँ. आप देखिए. Fine. What else is Rishabh's talent? I want to know a little more about you, Rishabh. All of us want to know more about you. ना talented आदमी नहीं हूँ मैं. Oh, please. सिर्फ फ्लो में जाता हूँ, यही मेरा सीक्रेट यही है. एक कंटेंट आया, मुझे एक पुश मिल रहा है, एक्साइटेड हूँ वो कंटेंट के ऊपर, तो फ्लो में जाता हूँ मैं बस. इसलिए मेरा बीवी बोलते हैं थोड़ा स्लो, सोच समझ के करो. मुझे एक आइडिया मिलने के बाद तो वो शूट करना है बस, वैसा जाता हूँ बस. Your passion is visible. I say that again. But in the film, Rishabh, we see your performance towards the fag end of the movie. That 20 minutes hair-raising climax. I mean, we were all at the edge of our seats, and I know that the entire focus was around that and how to get that perfectly right. And gosh, I mean, I can't even imagine how you actually delivered that performance. Would you want to tell us something about that? Even I don't know. No, but you know what? लेकिन मैं I could really imagine that you were really possessed. वो बात नहीं कर सकते हम लोग वैसा, मतलब वो क्या है ना, वो जो म्यूजिक है, जो दैव कोला का, जो आप भी मैंगलोर से है, जो वो म्यूजिक ज्यादा आपको एनर्जी देते हैं. दैव आने का जो प्रोसीजर है उसमें ये रंग अलंकार जो करते हैं और म्यूजिक जो प्ले होता है और लाइट्स जो रहता है और जो प्रोसीजर जो रिचुअल का जो करते हैं, वो सारे मिलके वो सब होता है. ओके, सो वी शुड, मैं एक बिलीवर हूँ, वो पूजा भी करता हूँ मैं. So you are very religious? Yeah, definitely. मैं एक वही मेरा वे ऑफ लाइफ, मेरा सब कुछ वो है. How many temples you visited right after your release? कम, धर्मशाला गया था मैं. और एक दैव स्थान गया था. ज्यादा टाइम नहीं मिला. एक अभी मैं प्रगति इतना बड़ा लिस्ट किया है, कम से कम 30 है. 30 टेम्पल है. 30 temples post the release of Kantara. Religious man. वो एक ये You've had God's blessings on लेकिन you. मैं वैजाग में एक टेम्पल गया था. मुंबई में सिद्धि विनायक का टेम्पल गया था. बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी फील हुआ था मुझे उधर. सो You know, Rishabh, the movie is so sensitive. At one point, one could imagine if it wasn't portrayed the right way, the way you did, it would have been offensive to people. You know, you've got to strike that balance by portraying the actual culture and tradition without hurting religious sentiments. How did you manage that balance? मैनेज करने का कुछ नहीं है उसमें. मतलब मैं एक बिलीवर हूँ, वो एक वैसा एक समाज से, ऐसा एक कम्युनिटी और ऐसा एक मतलब वो एक बिलीवर होके मैं आया हूँ.
सो मेरा तो मन में रहता है कि मैं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक सेंटिमेंट हर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं वो ये सेंटिमेंट हर्ट करने का, नहीं तो उसको मैं क्वेश्चन करने का, ये आइडिया में नहीं आया। ये कहानी वो ये आइडिया में नहीं बताया था मैं। मेरा थॉट है कि इसमें दैट प्योरिटी, दैट एनर्जी में क्या है, दैव को क्या मानते हैं हम लोग, दैव बोले तो क्या है, ये सब एक्सप्लोर करने आया था मैं। सो पॉजिटिवली मैसेज देना था मुझे। वो एक आइडिया था। उसके बाद जो दैव नर्तक जो है वो कम्युनिटी का लोग, वो एक टीम मेरे साथ थे। सो पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस में जो ये क्या क्या कर रहा था मैं दैव को लगा, वो साथ में थे, उन लोगों का गाइडेंस लिया मैं, उसके बाद ही किया था ये सब। You know, the tribal dancers of Karnataka today are so thankful to you. No. They are the great. Rishabh Shetty is our pride. No. We should not say that, क्योंकि उन लोगों का जो जर्नी जनरेशन टू जनरेशन, वो दैव को हम लोग सेवे और चाकरी बोलते हैं, वो सेवा करके आ रहे हैं। इट्स वेरी हार्ड। ऐसा एक कम्युनिटी को हम बहुत उन लोगों का जो रेस्पेक्ट उधर है। So okay, Karnataka government has decided to give allowance 2,000 rupees to those tribal dancers, to the elderly. I mean, you've not just changed your own life with the film and of course the Kannada fortunes of the Kannada film industry, but also the tribal dancers, you changed their life. वो एक करेक्शन बताता हूँ आपको, वो डांस भी नहीं है, वो एक रिचुअल है, वो एक पूजा है। दैव एक शक्ति मानते हैं हम लोग, भगवान जैसा। सो वो इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस। सो इट्स लाइक दैट। इट्स लाइक एक प्रकृति के अंदर का जो एक शक्ति, एक एनर्जी, एक आदमी के अंदर आना, वो एक ब्यूटीफुल प्रोसीजर है। सो दैव का जो ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೈವದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಥ್ರೂ ಮೈ ಸಿನಿಮಾ. ದೈವದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಲೋವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಥೀಮ್. So in front of God, there's no caste. Yeah, definitely. We're all equals. We are all equals. That was your portrayal. You know, but I'd like to ask you quickly on where did you get this inspiration? Did it really help that you come from the same region? You're from coastal Karnataka, from Tulu Nadu. That's exactly the belt where you come from. And have you always seen them around? Definitely. And has it been playing on your mind? What really ran behind your mind before you came out with this script? See, it's like a journey. मैं बचपन से क्या देख के आया था, वही लेके आने के लिए ट्राई किया। मैं मेरा फिल्म में वही एक्सप्लोर करने के लिए ट्राई किया था। सो इट्स लाइक लोग पूछते थे कितने रिसर्च किए, कुछ भी रिसर्च नहीं किया मैं। जो लास्ट अप्रैल में ये आइडिया मिला, जो 4-5 महीने में हम लोग पूरे स्क्रिप्ट, प्री प्रोडक्शन, सेट डालना, सब कुछ काम करके पैरेलली मेरा एक्शन सीक्वेंस को प्रिपेयर करना, कंबड़ा सीक्वेंस को प्रिपेयर करना, सब 24/7 पैरेलली प्रिपेयर होके सितंबर में शूट किए हम लोगों ने। उसके बाद इस सितंबर में हम लोग रिलीज किए। उसके बाद वो पैन इंडिया खुद बन गया फिल्म। हमने कुछ नहीं किया। You didn't even think from Kannada. So 1 year, only 1 year. You've dubbed it into how many languages now? अभी कन्नड़ा मिलके 5। सो अभी तुलु भी रिलीज हो रहा है, वो भी अभी रेडी हो रहा है। सो वो भी ऑडियंस का डिमांड You come from Tulu Nadu, of course. Tulu तो बनता है। सो ये पूछते हैं कि कितना रिसर्च किया। रिसर्च तो मेरा आई एम 39 नाउ, सो ऑलमोस्ट 5-6 स्टैंडर्ड में मैं यक्षगान गाना ये सब समझ में आने का शुरू हुआ था। उस समय से इधर तक रिसर्च ही है। I mean, we're so blown away with your performance, both of you. Rishabh, a quick word. I know that, you know, the Diwali weekend, there were movies like Mani Ratnam's Ponniyin Selvan. There was Akshay Kumar's, you know, film that was also released. You gave a run for all your money. You know, so now questions asking... Ponniyin Selvan was a big hit in Tamil Nadu. Well, it was. Kantara is now a bigger hit, clearly. I'd like to ask you, what's your next step? Is there Bollywood calling, Tollywood calling, Hollywood, you never know? ये तमिल में एक कॉमेडी है वडीवेलु सर का, तो वो पूरा प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट पूछते हैं स्टूडेंट्स, सो वो बोलते हैं नेक्स्ट रेस्ट। Rest? Now Rishabh can't rest. I know Rishabh can't rest. छोटा सा वो 2 महीने का Sapthami Rishabh can rest. But he needs it. But he can't, no? No, he's a very restless I will. person. यार 6 साल हो गया शादी होके, एक दिन भी टाइम नहीं दिया था मैं मेरा बीवी और बच्चों को। अभी मैं 2 महीने छुट्टी ले रहा हूँ।
You want to tell us a little bit about your family? I mean, what kind of support they've given you, Rishabh? Definitely, they are the backbone. प्रगति की वजह से मेरा ये जर्नी इधर तक मैं आया और इतने काम करने बहुत मुश्किल होता है. वो भी मेरा साथ इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन भी प्रगति ने किया है. So it's a family film. Yeah. I mean, the visual extravaganza in the film. She's acted too. She's acted, yeah. Even Sir's kids have been. Oh my God, that is so adorable. But congratulations. Thank you. Southern cinema making waves across the country today, and you're one of the reasons too. Thank you. I'd like to thank you personally for that. Thank you so Sapthami, much. what next for you? Don't know, let's see, just listening and trying to finalize on a few stories and scripts. Let's see where it will go, and exciting characters come my way. Of course, I'm going to go up and do it. New learning experiences. Yeah, so Rishabh, as we know, there have been enough and more controversies. There's also a lot of talk about Kantara for the Oscars, which is trending online. Would you want to shout out, maybe to be considered? No, मतलब वो उनका जो ये है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैं भी देख के मैं खुशी हो रहा है मुझे भी. Let's see, मतलब ये सिनेमा इधर तक आया है, it's not in our hand. So किधर जाते हैं देखते हैं. All right, Rishabh, Sapthami, thank you very much for giving us such a fabulous cinema, and I wish you all the very best Thank for your you. future endeavors. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. Thank you, Rishabh. Thank you. Thank you, Sapthami.